Hello, this is sir. Desai sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Fine, sir. A trainer is in the house so that we can begin. Yes, we have Neha, who is our trainer, on the line. Yeah. Okay, Sharma ma'am is there. Fine. Principal sir, can we begin, sir? Yes, please go ahead. Okay. Okay, good afternoon, everyone. I am Dr. S.S. Hassani, the IQAC coordinator of our Ntvs College of Law, Nandurbar, welcoming you to this online webinar. And the occasion is International Day of Yoga 2021. Friends, this year, the International Yoga Day is obviously an annual event which has the base in our country. The International Yoga Day was conceived by Prime Minister Narendra Modi, who proposed the concept on September 27, 2014, during his speech at UN General Assembly. The resolution to adopt June 21 as the International Yoga Day was introduced by India's can be viewed as a triumph moment for Indian soft power as it received support from more than 177 nations, the highest number of co-sponsors for any UN resolution. Currently, countries ranging from Canada to USA participate in this event. As we all know, we are struck with this pandemic situation. Still, we have not recovered fully. So the theme for the International Day of Yoga for this year is Yoga at Home and Yoga with Family. जिसका मतलब है इस बार का योगा घर पे ही और इस बार का योगा परिवार के साथ ही. With these global concerns around the COVID-19 pandemic, we have still found a way to celebrate this International Yoga Day. And so we have brought this webinar, which is a national webinar, national level webinar on yoga and pranayam for healthy living. Friends, today we have the guest with us, Neha Sharma, to whom I will give opportunity for our joint collaborator, Nitish Desai sir from Plex Wellness. I'm also happy to inform you all that this webinar is going live in joint collaboration with Plex Wellness. What is Plex Wellness? How about yoga and mindfulness or pranayam that you are going to know from both of these personalities, Desai sir and Neha Sharma madam. But on behalf of our institute, let me invite our principal of this college, Dr. N.D. Chaudhary sir, to address the audience. Sir, please. Am I audible, Dr. Hassani? Yes, sir. Good morning to all respected members who joined today's webinar on yoga and pranayam for healthy living. On behalf of Ntvs College of Law, Institute of Legal Education and Research, Nandurbar, I welcome you. And I am thankful to Plex Wellness for collaborating with us for conducting this program on this very important day. Friends, we know that 21st June is celebrated as International Yoga Day. Right from 2015, history is rightly pointed out by Dr. Hassani. The important thing is that awareness is very essential. And considering the importance of awareness, we thought it fit to have this program
on this, and we know that during this pandemic we cannot meet each other face to face. That is why using this platform we are conducting this yoga day online. Friends, even the United Nations, they have stated that this yoga can help with COVID-19 anxieties and for rehabilitation. So even those patients who were suffering from COVID-19, those who perform yoga during that pandemic, they recovered early. So we know the importance of yoga, and in each and every household, it is expected that it should be observed, it should be performed every day. So I am thankful to Neha Sharma madam, Desai sir, who are the yoga trainers from Plex Wellness for joining this webinar today, and who will guide all the audience for today in today's program. I am thankful to my management also for giving us an opportunity to conduct such type of programs regularly. So once again, I welcome you all and I request you all to be with us till the end of this program. Thank you. Over to Dr. Asani. Thank you very much, sir, for your valuable words. So, yes, friends, as rightly pointed out by Principal Dr. Andy Chaudhary, sir, that even the foreign countries have realized the importance of yoga in our life, what kind of yoga a comfort level provides in our life, or what kind of changes yoga can bring in our life, that we are supposed to know. And to create such kind of awareness to, especially to people of India, because yoga is known to be the gift given by given by our country to the world. So it is time for us to prove that whatever gift we have given to the world, that gift is a worth. Because many of the Western countries are following yoga like anything, but still in our country we are not that, or we can say, I can say that we are reluctant to practice yoga in our lives or in our day-to-day working. So yoga is a mirror to look at ourselves from within. Yoga does not change the way we see things, it transforms the person who sees. So like this, there are many benefits of yoga, but I'm not a right person to speak on this, all such things. In fact, even I, as you all, would like to know more about yoga and pranayam. So for that, we have brought two of the persons who will be speaking on these topics. Of course, the certified trainer, as I said, we have with us Neha Sharma madam, who is going to take this session. But before I invite Neha Sharma ma'am, let me invite the person from Plex Wellness, that is Desai sir, to address to the audience. Yes, sir, please. All right. Thank you, Principal Sir, and thanks, Dr. Hassani. I think both of you have really set the right context for this webinar by explaining about the International Yoga Day and the importance of yoga. I would request Neha, who is our yoga instructor, to share the screen, and I'll quickly walk you through what exactly is Plex Wellness, and then we can use maximum time to learn about the yoga, importance of yoga, and we'll also look at some of the simple yoga asanas or the breathing techniques. So I would request Mr. Hasni to enable the screen sharing option for yes, ma'am, us. I have done that. Now you can please try. Okay, yeah, sure. Thank you so much. All right, great. Thank you. Can we move to the next slide, the first one? All right. So I'll not, as I said, I'll not spend too much time into just explaining about the organization, because I want to give you and the trainer maximum time and to talk about the core topic that for which we have gathered over here. But I just want to highlight the key aspects of the Plex Wellness. Now, Plex Wellness works on the different aspects of the wellness. We know that health is not just about getting treated, going to a doctor and getting medicines, but it also includes multiple dimensions.
which we sort of generally ignore on our day-to-day life. So that's the reason we have different wellness aspects which are covered under our portfolio or our offerings. To have or to serve those offerings, we really collaborate and work side by side with physicians, physiotherapists, yoga instructors, or the medical doctors, so that we get their inputs, we gather all their inputs, and then we propose or serve a consolidated offering to our clients. Can we move to next slide? Yes, as I was mentioning, so these are the 4 different dimensions that we take care of. One being the physical wellness, and today's topic is going to be around it. Physical wellness would include not just the nutrition, but would also include yoga, exercise, physical therapy related guidance. We do have another wellness dimension, which is emotional wellness, where we have psychologists onboarded with us to take care of the emotional wellness related topics. We do generally tie up with the different corporates, institutions, schools, colleges, and try to offer the corporate wellness packages. And the 4th one, which is very specific to, again, the dietitians, bringing under the physical wellness bracket, or sort of tying up with the intellectual wellness, where we have a sister company which runs parallel to, or which falls under the Plex Wellness umbrella, that is to give basic business related guidance to dietitians so that they can really start their independent freelancing practices, which is named as Dietitian Entrepreneurs Academy. Okay. Since we are now working in the online or the virtual mode, we have sort of got adjusted or used to it. Our counseling sessions are mostly on the online platform. We do have a limited coverage for the home visits, but that is really in the restricted geography. Can we move to next slide? Yes. Now, I'll not be really talking about the each and every specific offering or the products that we have or the packages that we have. That's not the purpose. That's not the today's purpose, but to really serve today's purpose. And we also don't want to have this engagement limited for next 45 minutes or 50 minutes. And to facilitate that, what we have done is we have created a Facebook group, which is on your college name. I will put in the link in the chat so that you have that direct link and you can join the group. Under this group, we will continue to give you or put forward a content which is on the health literacy, that will not just cover the diet aspects, but it will also have yoga aspects, emotional wellness aspects. And this is just our a sort of a pro bono work or additional efforts from our end to continue to maintain or to continue to have that wellness discussion with this group. Okay. Next slide, please. Yes. And these are our contact details. You might have visited our website already. I've displayed the email ID, the contact number. These are our social media handles. So feel free to join those. We regularly post those good health literacy related content over there. If you want to have or have any inquiry or want to know more about us, you can either drop us a note or give a call on the number which is mentioned over here. Now, let's move to the actual program for today. And before passing on to Neha, I would just quickly like to introduce Neha Sharma, who is our wellness partner. She's a certified yoga instructor, and she has done these certifications from a really renowned institution, Morarji Desai National Institute of Yoga. She has done certificate course in yoga for protocol instructor and a foundation course in yoga science for wellness. She has experience in terms of conducting these yoga sessions, one-on-one sessions, and now we are working in a virtual mode. So obviously all of these sessions are on a virtual mode. But if you want to know more about or inquire about our wellness packages or our yoga packages, feel free to drop us a note on the email ID or the phone number. Okay. That's the only short, quick introduction that I wanted to share. And now I'll pass it on to Neha to continue with the program. Over to you, Neha. Yeah, thank you so much. Oh, yes, am I audible?
Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you so much. And I would really like to present my gratitude to Professor, to the principal, and to you, Dr. Hassani, to giving us the platform here so that we can help spread the awareness among all the people around us. Because honestly, as you've also mentioned, that yoga being the origin of the yoga here in India, the people are not much aware about it and they do not practice it as much as the people who are out there in all around the world, they're practicing it. So, yes, this is something, this platform gives us a place where we can discuss about it, and not the advanced level or the intermediate level also, even if we can start from the very beginner level. That would also make us believe in something. And it is not about just one day. Let's say that we are holding this webinar on one day and we do yoga, we talk about yoga, but next day it's the same day. So it's about inculcating yoga into your day-to-day life. So with this, I would start my presentation, and I hope you can all see the screen. And I would request you all to just synchronize your breathing with the screen. So with the next inhale, we'll start. Slowly we'll inhale, expanding our lungs. And now hold for a second. Just stay there. And now we slowly exhale. Maybe with the next inhalation and exhalation, you can just close your eyes for a second and breathe in. And hold there. And let's breathe out. Though it was a really simple exercise, but trust me, this is something which we usually forget to do even in our day-to-day life. When I'm talking about yoga, we're talking about wellness and health, but we do not focus on our breathing also. During the day, we do not see how we're breathing. So just stay there and slowly breathe in, taking your stomach all the way out. Hold it for a second or two, and then you can breathe out slowly. This is something which can make you more aware of your body, of yourself. Now moving on to, and let's start the webinar with what is yoga. When we're talking about yoga, this time I would request the students to also join us. If they can just drop a text in the chat box, and we can have a little bit conversation of what you feel yoga is according to you. And anyone who want to say, they can also unmute themselves, raise their hand, and we can discuss. Yes, participant, anyone can raise their hand if you want to share anything, or you can type in the chat box. Maybe just a word or two is also good, so that we'll know. For me, yoga is especially a peace of mind. Okay. Let's just have 2 or 3 more says, and then we can move ahead with it. Anyone who wants to say anything, that is totally okay. It doesn't have to be something with a proper definition or meaning. It can be anything, whatever you feel. Okay, we have one more reply. That is union of body. Yes, that's the one. Peace, union. That's all what we talk about. And it is necessary for healthy life. From Nagrajan, Antima, and Shaili. Okay, so I guess we'll start from here only. So yes, yoga is the union of body and mind. Yoga is what we say that it is healthy, it is necessary for the healthy life, and it gives you peace of mind. If I'm talking about the actual yoga, that means simply yoga means union. And according to the Sanskrit root, it is the yuj, which means to bind, to join, to yoke and attach. And yoga practice, according to many scriptures, it is the union of an individual consciousness with the universal consciousness. भले ही वो हम उसे विचार व कर्म कह लें या संयम या उपलब्धि कह लें, इन सबको जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, मानव या प्रकृति कह लें, इसके हम बहुत अलग अलग नाम ले सकते हैं, but eventually it is the union. It is something which binds you towards yourself.
It is actually seeking the supreme self within yourself. It is not about something which you find in the external world. It is something which you expect from yourself. It is something which you believe in yourself. And yoga is not just exercise doing the asanas, but it is to discover the sense of oneness with ourselves, the world, and the nature, I would say. And talking about the origin of yoga, the yoga is widely considered as an immortal outcome, cultural outcome of the Indus Saraswati Valley civilization dating back in to 2700 BC. क्योंकि उस टाइम पे जो चीजें मिली हुई थी, जो कॉइन्स कुछ मिले हुए थे, उनमें जो डिपिक्ट करा हुआ था पोजेस, वो योग साधना थी और चीजें थी, तो वहां से हमें योगा का ओरिजिन पता चलता है. बट इट इज नॉट लाइक कि दिस वाज द ओनली टाइम जब वो प्रैक्टिस हुआ है. उससे पहले भी इट वाज प्रैक्टिस्ड. बट अगर हम बात करते हैं कि ये सारा चीजें सिस्टमाइज किसने करी, कोडिफाई किसने करी ये प्रैक्टिसेस, तो वो थे द ग्रेट सेज महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने हु सिस्टमेटाइज्ड एंड कोडिफाइड द प्रैक्टिसेस थ्रू हिज योग सूट्स. पतंजलि के जो महर्षि पतंजलि के जो योग सूट्स थे, उसमें उन्होंने अपना एक जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द सोसाइटी वो आया है, क्योंकि वहां से हमको एक सर्टेन वो मिल चुका है, बेस मिल चुका था, जहां से अब सब लोगों के पास एक सिस्टमेटाइज्ड वे में योगा आगे गया है. And even after this and before this, there were other masters also who contributed to the preservation and development of yoga by documenting the practices and spreading them all over the world. And today, millions of people across the world are benefiting from the practice of yoga. And even in the time of COVID, the yoga was something which everyone was getting into, because whether it was the recovery or for the peace of your mind or for just the calmness which you need, the bonding which you need in your family, because everyone was at home 24/7 for such a long time. And there comes a point where no matter you're living with your parents, you're living alone, you feel the uneasiness. And at that time, yoga brings that calmness, that stillness within you, and it helps to also stay positive in the environment. So yoga is something which gives you that space, which you can own and which you can stay in. And with this, yoga also works on the levels of one's body, mind, emotion, and energy. And this has led to the identification of four broad classifications of yoga, which I can say: the Karma Yoga, where we utilize our body; Gyan Yoga, where we utilize the lighter mind, and it is also known as the Yoga of Wisdom; Bhakti Yoga, where we utilize the emotions; and Kriya Yoga, where we utilize the energies. And this is just the four broad classifications which I'm telling you. And whatever system of yoga we practice falls within these four categories only. And they have been further adopted and developed by different schools of yoga, because initially जब चीजें शुरू हुई थी हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, उसकी वजह से अलग अलग गुरुज के थ्रू जो लीनिएज पास ऑन हुई है, उसमें वो योगा का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें थोड़ी अलग हुई हैं. मेन मोटिव सबका वही था, बट हाँ, शायद से उस मोटिव तक, उस गोल तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा किसी का कुछ चीजें पहले, कुछ चीजें बाद में बदली थी. And with this, the different schools of yoga came into the picture, namely the Patanjali Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Dhyan Yoga, Antra Yoga, Laya Yoga, Raj Yoga, Jain Yoga, and even the Bodh Yoga. तो ये सारे just गुरु शिष्य की वजह से हमने schools बना दिए. Eventually, the goal was same for everyone. Now talking about कि योगा क्या है वो हमने कर लिया. Now talking about the health promotion, the health well-being which we talk about right now, जो सबसे ज्यादा important है. अगर हम वो एस्पेक्ट लेके चलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जब हम हेल्थ वेलबींग की बात करते हैं, हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, हेल्दी बॉडी की बात करते हैं, तो व्हाट इज हेल्थ? So according to WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So it is not that just because you're healthy means it has to be not just the physical aspect, but yeah, all those aspects included. And through the regular practice of yoga, the blood flow, the oxygen supply of the whole body increases. And उसी की वजह से हमारा जो पूरा का पूरा body है उसमें जो energy levels होते हैं, they increases.
Now talking about the three main points where we can discuss कि इनका importance and इनका effect कैसे होता है. We go to the physical benefits, we go to the psychological benefits, and we go to the spiritual benefits. Now talking about the physical benefits, if I say it in helps you become more flexible, क्योंकि जब हम योगा कर रहे हैं, हम कोई भी योगा आसन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे मसल का मूवमेंट होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट होता है, एंड विद दैट मूवमेंट हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डे टू डे इंक्रीज होती है. हमारे हैमस्ट्रिंग्स ले लो, हमारे शोल्डर्स, हमारी बैक, हमारा नेक, सो द होल बॉडी बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज एवरी डे यू flexing it just a little and little more. So if we start with any forward fold also, जो हम पाद हस्तासन की बात करते हैं, उसमें हम कभी भी फर्स्ट डे नहीं बोलते अपने किसी भी स्टूडेंट को कि आप सीधा स्ट्रेट लेग्स रख के आप आगे झुके. हम खुद बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि अभी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा सा नीज को बेंड कर लो. व्हाट इज इट? हम उसको एक सिंपलर वे में कर रहे हैं कि एटलीस्ट यू प्रैक्टिस इट, एंड वो लॉन्ग रन में धीरे धीरे वो बेंट नीज अपने आप स्ट्रेट होंगी. सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी. टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, कितने आसन होते हैं जिसमें हमारा पूरा बॉडी का वेट सिर्फ हमारे अपनी ही बॉडी हम ले रही होती है, वेदर इट इज ऑन द लेग्स और इट इज ऑन द हैंड्स. सो कंप्लीटली इट builds the more strength to the body. And also even in the balancing poses where we are balancing on one leg or say or in any other pose, what is building? We're building strength. Better breathing we're talking about, उसमें हमारा mostly comes your pranayam. सबसे पहले whenever we talk about breathing, we talk about pranayam in yogasan, but in yoga. But even apart from going to pranayam, one more thing which is there is कि the consciousness जो हम लगाते हैं when we're doing the asanas also. क्योंकि when we're doing asanas उस time पे भी with the जो हमारा flow चलेगा in a certain pose, if we go at what time you're inhaling, we're retaining the breath for a second or two and then exhaling, or maybe we're getting in the position with the inhale, and once we're there we breathe normally. After that we exhale and we come back, we inhale, we come back. So however it goes, हमारा breathing पे focus होता है. Pranayam तो is all about breathing. तो जब हम breathing पे focus करते हैं, हमारा lung capacity increase होती है, and कहीं ना कहीं आपका ध्यान सिर्फ breathing पे चला जाता है, and उसकी वजह से एक आपका कामनेस भी मेंटेन होती है ना, आपको फोकस सिर्फ एक पॉइंट पे लग जाता है. डिजीज एलिमिनेटर की बात करते हैं तो इसमें वी कैन से दैट योगा इज समथिंग व्हिच कैन फॉर श्योर प्रिवेंट द डिजीजेस, एंड टॉकिंग अबाउट क्योरिंग द डिजीजेस वो भी पॉसिबल होता है योगा के थ्रू. इट इज नॉट दैट कि हम क्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टॉकिंग अबाउट द षटकम, जैसे हमने सबने देखा होगा जल नीति जो होती है, उसमें हम जल नीति, सूत्र नीति हो गई, ये दो एक ऐसी चीजें हैं कि अगर आपका बोला जाता है कि जो भी शोल्डर से ऊपर की आपकी दिक्कत है, वेदर इट इज द आईज और द ईयर्स और द नोज, एनीथिंग दैट कैन बी टोटली क्योर्ड विद दीज प्रैक्टिसेस. षटकम आपके बिल्कुल क्योर कर देते हैं. एंड इवन फॉर द प्रिवेंशन, क्योंकि जब आप डे टू डे लाइफ में योगा को अपना लाइफ में एक पार्ट बनाते हो, तो उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो. तो इस वजह से वो आपके डिजीज को, आगे आने वाले डिजीजेस को तो डेफिनेटली प्रिवेंटिव मोड पे ऑलरेडी ले जा चुकी होती है. This was the physical aspect. And now talking about the psychological aspect, if we go, whether it is the mental calmness, concentration, memory, body awareness, or the stress reduction, मैं सबको एक ही पॉइंट में अगर कंबाइन करना चाहूँ तो ये होगा कि जब हम साइकोलॉजिकली बात करते हैं, तो क्योंकि अगेन जब हम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आगे के स्टेजेस पे तो मैं जा भी नहीं रही हूँ, बट हाँ अगर हम जस्ट इन पे फोकस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा फोकस सिर्फ हमारी बॉडी पे होगा या हमारी ब्रीदिंग पे होगा. एंड जब वो होता है ना, तो अगर आप वो आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुश्किल से आप 10 या 15 मिनट ट्राई करके भी कहीं और माइंड को डाइवर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि आपको हर टाइम बॉडी पे फोकस करना है कि आप कौन सा हाथ ऊपर जा रहा है, कौन सी पीछे की तरफ मुड़ना है, वेदर कोई भी मूवमेंट है, यू आर फोकसिंग ऑन दोज मूवमेंट्स. टॉकिंग अबाउट द ब्रीदिंग, साथ के साथ आपको एक तो बॉडी पे ऑलरेडी अवेयरनेस लानी ही लानी है. एट द सेम टाइम यू हैव टू रेगुलेट योर ब्रेथ अकॉर्डिंगली, that if we are inhaling we stretch up,
If we're moving, twisting to the side, we exhale. So these are the small points. जब आपकी awareness इन चीजों पे आ जाती है तो आपका psychologically आप एक बहुत ही calm state में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका जो stress level होता है ना वो अपने आप reduce होने लगता है, क्योंकि आपका और किसी चीज पे ध्यान जाएगा ही नहीं. आप इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं उस टाइम पे, इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं जस्ट वो दो चीजों को बैलेंस करने में, बॉडी एंड योर ब्रीदिंग, कि आप तीसरी चीज को ला ही नहीं पाते. और जब वो तीसरी पिक्चर फ्रेम से हट जाती है, देन इट इज जस्ट यू, योर बॉडी. तो इस वजह से आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लेवल. once you're physically fit, once you're psychologically sound, uske baad spirituality is something which we cannot say is something related to the religion or beliefs of a person. If I'm talking about spirituality, it is again finding that supreme self within yourself. It is not about any other belief, but something which you personally believe in. It can be you as well, it can be something else, but it is not related, or we can put it in a frame or in something बहुत ही छोटा सा चीज. तो वो हम एक broader aspect में जब लेकर जाते हैं, then we talk about spirituality. Again, when we are talking about spirituality, वो ही चीजें हैं कि अगर हमने अपनी बॉडी पे ध्यान दिया, अगर हमने अपने माइंड पे ध्यान दिया उस टाइम पे ही, क्योंकि आप ये जब लेकर आ रहे हैं उसी के बाद कम्स द पॉइंट जहां पे आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे. जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे उसी टाइम पे आपको एक इनर पीस, मे बी इट इज नॉट इजी. जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अगर हम कुछ अच्छा देख रहे थे तो हम में अपने अंदर की बुराइयां भी दिखने लगती हैं, बट उस टाइम पे उन बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना, उन पे काम करना हमें एक इनर पीस देता है. एंड जब हमने अपने पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया, हमने एक इनर पीस फॉर्म कर लिया, उस टाइम पे हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है, जो कि इवेंचुअली सबका सेम है. So with this, the benefits of yoga is something, I guess, even before me, Dr. Hasani also told us, and even Principal Sir has told us the n numbers of reasons, why you should inculcate yoga. These are the very small things. It is not I'm talking about all the details and the deep things in the yoga, but it is something which we can all relate to. For someone who has been practicing from 10 years, 20 years to 5 years, 4 years, and also to the one who might be starting tomorrow as well. These are something which everyone should know कि basic जो चीजें हैं, अगर हम योगा शुरू करते हैं वो हमारी कहाँ से शुरू होती हैं. So with this the importance goes on. And now let's talk about कि अगर हमने the importance देख ली, we know what yoga is. Now जब हम इसको अपना life में लेकर आ रहे हैं, how we can inculcate it in our life, because it is not like just one day you woke up and you're like okay chalo let's do yoga and आपने शुरू कर लिया, because next day trust me वो शायद चीज खत्म हो जाएगी जब तक आपने एक पूरा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करा है. सो अगर हम सिंपल किसी चीज से शुरू कर सकते हैं, आई गेस दैट इज द फूड, बिकॉज नो मैटर व्हाट, in order to survive we have to eat. So when we're talking about food, योगा में हम उसको मीताहार बोलते हैं, द बेस्ट इफ वी कैन से, एंड इट इज द मॉडरेट डाइट वी से. एंड बाय द मॉडरेट डाइट, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मीताहार की तो इसके हम 3 एस्पेक्ट्स लेके चलते हैं. फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ फूड, कि आपका क्वालिटी कैसी होनी चाहिए फूड की. योगा में हमेशा बोला जाता है कि आपको सात्विक फूड लेना होता है. अब सात्विक से चीजें बहुत ज्यादा ही हो जाती हैं, क्योंकि जब हमने सात्विक वर्ड ले लिया तो एक बहुत ही ऐसा वर्ड हो जाएगा कि अरे ये तो बहुत ही अलग सा वर्ड है, ये कौन सा तरह का फूड होता है. तो सात्विक फूड इज नथिंग बट सिंपली जो आपकी बॉडी को काम करे, आपको एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड दे जिसमें आप शांत हो, आप बहुत ही खुश हो. क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका फूड है वो आपने बहुत ही ज्यादा, जैसे हम कोई भी स्पाइसी फूड खाते हैं तो हमको पता है शायद से अगले 15 मिनट तक हम सिर्फ पानी के लिए या कुछ मीठे के लिए भाग रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी को उस पॉइंट पे शांत नहीं कर रहा होता है. तो सात्विक फूड इज समथिंग विच इज नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, समथिंग जो बहुत ज्यादा पका हुआ भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए. तो समथिंग विच इज इन मॉडरेट अमाउंट, something which is not going to the extreme, something which comes and balances everything. And usually we take the green vegetables, the fresh vegetables into this aspect. So anything which soothes you,
And not like if talking about the calmness and something which you feel happy about, then someone will say obviously pizza makes me happy, burger makes me happy. Yes, for some time they do make you happy, and actually not happy, you just feel something ki I had pizza today, oh it's amazing, I had pizza, I had pasta, I had anything else. But taking it a long run, वो चीजें healthy नहीं होती. तो इट इज नॉट लाइक इफ आई एम प्रोमोटिंग मीठाहार इधर, तो मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं शायद से कभी पूरी जिंदगी में मैंने पिज्जा नहीं खाऊंगी या मैं पास्ता नहीं खाऊंगी. खाते हैं क्योंकि लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस, लिविंग इन अ सोसाइटी लाइक दिस ऐसा नहीं है. जब हम शादियों में भी जाते हैं तो भी वी ईट ऑल द अच्छा तेल वाला खाना, मीठा खाना, बहुत ज्यादा ऐसा खाना. बट इट इज समथिंग जो एक सर्टेन एस्पेक्ट तक ठीक है, बट इन अ डे टू डे लाइफ आपको जो एक नॉर्मल अपनाना चाहिए वो हमेशा सात्विक फूड ही अपनाना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फूड, it as I hope you can all see the graph as well here, it is the whole capacity of the stomach in which 50% should be filled with the food. So whatever you eat should be just 50% of the capacity, and then 25% can go to the liquids, any sort of liquids, water as well. So eventually it turns into the water wala aspect. So that is where 25%, and the rest 25%, which is air, is just we keep the space empty, so that when the digestion process is going on, when the gases are there, so they have the space to move around. If you fill the stomach with the food and with the water only, then you won't, the digestion process will slow down, because right now they do not have the space to rotate. Let's take an example of simple, I guess घर में सबके हमारे मिक्सी होती है, तो हम उसमें भी we leave some space कि हम कोई भी चीज which we have to mix हम उसमें डालते हैं, and then we leave some space क्योंकि otherwise हमने वो full कर दिया, it will come out. So we won't be able to mix it properly. So we always leave some space, 25% there, so that when they're mixing, when they're moving around, rotating around, they have the space, the desired space. Now let's talk about the state of mind while eating food. सब बोलते हैं that we, in all most of the religions also हमें बोला जाता है कि सबसे पहले हम उस सुप्रीम को जो ऊपर हैं उनको हमारा फूड समर्पित करते हैं, एंड उसके बाद हम खाते हैं. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन रिलीजन, इन मोस्ट ऑफ द रिलीजन इट्स द सेम. भले ही हमारा वो जो एक सुप्रीम है उसको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, बट इवेंचुअली जब हम बैठते हैं तो हम उनको याद करके एंड उनको पहले देके उसके बाद ही हम खाते हैं. वो एक बस जरिया है ताकि उस टाइम पे आपका सारा ध्यान एक तरफ हो जाए. एंड उसके बाद हम बोलते हैं कि हमें 32 times we have to chew the food. Why and who counts 32 times? Maybe sometimes I make it 35 also, and sometimes it makes 20 also. But the idea behind chewing the food completely till it becomes in almost the what is squishy of form is just that once it is mixing with the saliva, so already जो आपका process नीचे जाके होता है ना, कि जब आपने मोटा मोटा गल्प कर लिया है वो नीचे जाके eventually they all have to grind. सिंपल लैंग्वेज में. सो अगर हम पहले से ही वो प्रोसेस को और उसको ब्रेक डाउन करके चलेंगे तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कन्वीनियंटली हो जाएगा. तो इस वजह से उस टाइम पे जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है वो बोला जाता है कि आपको और कोई भी चीज है, कोई भी स्ट्रेस है, वेदर इट इज अबाउट योर ऑफिस और योर स्कूल्स और योर कॉलेज और एनी फैमिली थिंग, you should keep everything aside. And especially let's talk about the anger. Most of the time what I have seen is कि लोग गुस्से में खाना छोड़ते हैं. खाना और ज्यादा खाओ बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ, ज्यादा नहीं बट हाँ, खाने पे कभी भी वो मत करो कि किसी भी तरीके से आपका खाना सफर नहीं करना चाहिए. अगर आप दिन में 2 मील्स लेते हो, आप 3 मील्स लेते हो, टेक देम ऑन दैट टाइम ओनली. जो भी उस टाइम पे आपके दिमाग में अपार्ट फ्रॉम दैट फूड इन फ्रंट ऑफ यू कोई भी चीज है, जस्ट लीव दैट असाइड. उसको एक अलग प्लेट में निकाल के रख दो. हैव योर फूड फर्स्ट, फोकस ऑन योर फूड फर्स्ट, एंड उसके बाद वी कैन वर्क ऑन द अदर थिंग्स. सो दिस इज समथिंग वी टॉक्ड अबाउट फूड.
उसके बाद नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द आसन्स। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम योगा प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे एडवांस या इंटरमीडिएट को भी टैप करना नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में दे आर इन द प्रैक्टिस, सो राइट नाउ इट इज मोर अबाउट ब्रिंगिंग द अवेयरनेस. So now when we're talking about the asanas, so first let's talk about the guidelines, the basic guidelines which we should follow if you're planning to start the asanas also or the yoga practice. So before the practice, जो अगर हमारे गाइडलाइंस होते हैं उसमें हमारा शौच आता है, which means cleanliness, and it is not just about the surrounding which you are in right now, it is also about the cleanliness of the body उस टाइम पे. देन काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें क्योंकि अगर आप किसी भी बहुत ही ज्यादा शोर शराबे में सोचोगे आप योगा कर लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल. आपका दिमाग 10 जगह घूम जाएगा, साइड वाला क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये लड़ाई क्यों हो रही है, क्या काम नहीं हो रहा. तो इस वजह से इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू हैव इट एक बहुत ही शांत एनवायरनमेंट में, जहां पे आप सिर्फ अपनी बॉडी और अपने आप से कनेक्ट कर सको. एंड उसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम ध्यान रखते हैं, कभी भी योगा प्रैक्टिस करने से पहले आपको 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए खाने में, क्योंकि जब तक अगर आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, जब तक आपका जिस पॉइंट पे आप योगा मैट पे आके खड़े होते हो आपको ये नहीं लगता कि हाँ आपका पेट कंप्लीटली खाली है, जब तक इट वोंट सर्व द पर्पस एंड आपको भी दिक्कत होगी. एंड किसी भी स्टेज जिस टाइम पे यू आर नॉट फीलिंग वेल, किसी भी तरीके से एग्जॉस्ट हो रखे हो, उस टाइम पे यू शुड अवॉइड डूइंग योगा और यू शुड नॉट एट ऑल डू योगा. अगर आपको कुछ चीजों पे करना भी है तो वो सिर्फ किसी गुरु की या जो भी आपके टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनके अंडर ही आप करेंगे चीजें. ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ योगा हमारी जो अवेयरनेस है वो सिर्फ हमारी बॉडी और ब्रेथ पे होनी चाहिए, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. एंड हमें मोस्टली सिर्फ नॉस्ट्रल से ही ब्रीथ करना चाहिए. वी ऑलवेज हैव टू इनहेल थ्रू द नोज ओनली. बहुत ही जब अगर आपको इंस्ट्रक्टर या वो आपको किसी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जब बोलते हैं, सिर्फ वहां पे आप उनको, और किसी अगर हम माउथ से कभी इनहेल करें तो वो एक अलग चीज है, अदरवाइज इट शुड बी थ्रू द नॉस्ट्रल्स ओनली. एंड यू शुड नेवर होल्ड योर ब्रेथ जब तक आपको बोला नहीं जाए. कॉन्ट्रडिक्शन एंड लिमिटेशंस बहुत होती हैं जब हम योगासन की बात करते हैं, वेदर इट इज फॉर द वन सफरिंग फ्रॉम द लोअर बैक प्रॉब्लम्स और द हार्ट डिजीज और डायबिटीज और द थायराइड एंड आपके कोई भी अगर हम डिजीज लेकर चलते हैं, इवन बहुत ही सिंपल से अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट है, किसी भी चीज पे बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, वो हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए. आफ्टर प्रैक्टिस just 2 main things which you should remember is कि आपका जो खाना है या फिर आपका नहाना है वो 20 से 30 मिनट के बाद ही हो. एंड इवन पानी पीने के लिए भी अगर जब आपकी बॉडी पूरी कूल डाउन हो चुकी है तो वो 10 या 15 मिनट में होती है, तो उसके बाद आप थोड़ा पानी पी सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट सम आसन्स इफ वी गो, तो हमारे सबसे पहले हम थोड़े स्टैंडिंग आसन्स के बारे में बात करते हैं और जस्ट उनके बेनिफिट्स. वृक्षासन होता है, जैसा आप इसमें देख सकते हो बैलेंसिंग पोज बहुत ज्यादा है. इसमें आप एक पैर को नीचे रख के एक पैर को मोस्टली आप अपना बिल्कुल ऊपर अपर थाई पे रखते हो, और इवन इजी उसके लिए आप एंकल पे भी रख लेते हो. इसके बेनिफिट्स ये है कि आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करेगा. अगर आपके हाथ ऊपर की तरफ है तो आपके शोल्डर्स की मोबिलिटी भी इंक्रीज करता है, स्पाइन को और अलाइन करता है. तो इस वजह से ये जस्ट कुछ आसन्स हैं जो जस्ट एक मैं आपको ग्लिम्स दे रही हूँ कि विच यू कैन ऑल्सो इनकलकेट इन योर डेली लाइफ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बहुत ही ईजी है. टेकिंग टू द नेक्स्ट आसन इज पादहस्तासन, जिसमें हम मोस्टली अपना ट्रंक को नीचे की तरफ झुकाते हैं. इसमें अगर बिगिनर्स हैं वो ट्राई करें कि थोड़ा सा बेंड कर ले नीज को, और जितना हो सके जितना आप नीचे जा रहे हो उस टाइम पे अपनी कमर को स्ट्रेट रखते हुए जाएं. ट्राई करें सामने की तरफ देखिए, क्योंकि जब सामने की तरफ देख रहे होगे आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है. लास्ट में आप बिल्कुल जब ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच जाए, जब सर को अंदर की तरफ और नीज की तरफ यू बेंड इट. इसका अगेन जो आता है आपका लेग्स को स्ट्रेंथन करेगा, आपका स्पाइन को स्ट्रेंथन करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, आपके शोल्डर्स पे भी वर्क करेगा. Getting to some sitting asanas, Bhadrasana, I guess this is one thing जो most of the Indians know, whether it is the छोटे बच्चेज or the वो uncle aunties in the park, everyone knows Bhadrasana, butterfly pose इसमें. But हाँ, इसमें अगर हम not just the butterfly I'm talking about, अगर हम इसमें सिर्फ थोड़ी देर बैठते भी हैं, होल्ड करते हैं, वो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है. तो इस वजह से, और ये मेडिटेशन पर्पस के लिए भी अगर आप रोक के करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा आपको बेनिफिट्स देगा.
Now talking to the Matsyendra Asan, इसमें I hope you all can see the pose. हम क्रॉस लेगेड जाके देन वी ट्विस्ट इट टू द साइड. जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो अगेन आपके शोल्डर्स पे, आपका नेक, आपका स्पाइन और इट्स योर बटक्स एरिया, उन सबको स्ट्रेंथन करता है. एंड साथ के साथ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आपके चेस्ट को ओपन भी करता है टू द साइड, वर्किंग ऑन योर अगेन द डाइजेस्टिव सिस्टम मूव. Talking about the next asan is your Bhujangasana. Bhujangasana, cobra pose you can say. इसमें हम सबसे ज्यादा अपने चेस्ट को ओपन करते हैं और उसके बाद हमारा एक बहुत ही अच्छा लंग की कैपेसिटी को हम इंक्रीज करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट आसन इज सर्पासन. सबसे बेनिफिशियल है आपकी लोअर बैक्स के लिए, आपके आर्म्स को स्ट्रेंथ करने के लिए. एंड Now coming to the next asan is the Setu Bandhasan. ये आपका नेक रीजन हो गया, आपका लोअर बैक हो गया, आपका चेस्ट हो गया, इन सब पे आपका इम्प्रूव करता है. एंड स्पेशली दिस आसन ऑल्सो वर्क्स फॉर द ब्लड सर्कुलेशन. Now moving to the next Pavan Muktasan, again something which helps you in the digestive system. अगर आपको constipation है, indigestion, and this is the go-to asan for anyone, and it is really simple asan. So I guess this is something which everyone can have in their yoga practices on the daily basis also. Now last but not the least, I guess the most important asan if I talk about is Shavasana or the corpse pose. क्योंकि इसमें जब आप पूरा एक जर्नी से आ रहे हैं योगा की, लास्ट में यू नीड दैट रिलैक्सेशन. उस टाइम पे आपकी बॉडी जब मेल्ट हो रही होती है एंड यू कैन फील ईच एंड एवरी पार्ट ऑन द ग्राउंड. दैट इज समथिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपकी पूरे के पूरे सिस्टम को एक बहुत अच्छा ब्रेक देती है एंड एवरी वन शुड इंक्लूड दिस इन देयर प्रैक्टिस. मतलब एनी टाइम इट शुड नेवर, यू शुड नेवर लीव दिस आसन, क्योंकि बहुत सिंपल है तो मेनी अ टाइम्स वी थिंक we can skip it, but we should never skip it. Now let's come to the pranayam. I would request all the participants if they can join us, because we'll be doing just 5 rounds of them. So if it is possible for everyone, also I would request the principal sir and also Dr. Hasni sir to join us so that we can just have some little pranayam, because if I talk about is something pran and ayam. तो हम इसमें जो सबसे मेन चीज होती है प्राण, इफ यू टॉक अबाउट इट इज द वाइटल फोर्स एंड आयाम इज द एक्सपेंशन. तो जब आप अपने वाइटल फोर्स को एक्सपैंड करते हो थ्रू आउट द बॉडी, दे कैन इजिली रोटेट, वो होते हैं. तो सिंपली विल जस्ट कम एंड स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट द प्राणायाम. सो फर्स्ट इज द नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्सो नोन एज अनुलोम विलोम, एंड इन दिस वी टेक द ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग. इसको हाथों की जो मुद्रा है वो हम काफी सारी रखते हैं, तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो. अगर हम राइट नॉस्ट्रल को सबसे पहले बंद करेंगे एंड लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं, वी इनहेल एंड उसको क्लोज करते हैं. राइट से वी एक्सहेल, राइट से वी इनहेल, क्लोज इट, लेफ्ट से वी एक्सहेल. Get to share this PDF with us so you can practice this asanas every day. Okay, I will definitely share the PDF. Yeah, so we'll repeat this for 4 more times. I would request everyone to join us. You can simply use the thumb and the ring finger, or you can take the first 2 fingers and fold them. And after that, with the thumb and again with your ring finger, we'll keep them here. And let's begin. From the left side, we inhale. You can also close your eyes for some time and actually focus just on the breathing here. We'll do it for 3 more rounds. And 2 more rounds, last 2 more rounds. And meanwhile, I'll talk about the benefits Anulom Vilom ke. And अनुलोम विलोम में सिंपली जो आपका नाड़ीज को, जो एनर्जी चैनल्स हैं, उनको बहुत ही ज्यादा शांत करता है. आपको एक पूरा चैनल, एक पैसेज ओपन कर देता है. अगर कोई भी हमारा वहां पे पॉज है या फिर कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शंस है, वो उनको ओपन करता है. एक सूदिंग इफेक्ट आपको देता है. साथ के साथ आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर को बैलेंस करता है, सो दैट आप एक बहुत ही अच्छे स्टेट में आ सकते हो. आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो और अच्छा हो जाता है.
And now talking about, so I hope everyone has completed their 5 rounds of it, and we can join back here with the शीतली प्राणायाम. This will do for 3 times. शीतली प्राणायाम की अगर बात करते हैं तो ये आपको बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है. साथ ही साथ अगर इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलती हूँ तो वो आपके जब जिनका भी आपका हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए बहुत अच्छा है. गर्मियों के टाइम के लिए इट इज रियली गुड टू कूल डाउन योर बॉडी. सो इन दिस विल सिट स्ट्रेट एंड हम अपनी टंग को रोल करेंगे टू मेक इट इनटू अ पाइप like this, and then with this tube we'll inhale the air in from the mouth only, and try to close your eyes for a second here. Take all the air in, close your mouth now, and slowly we'll exhale through our nostrils. And now we'll repeat it for 2 more times. I hope you all are joining here. So we'll roll the tongue, and we exhale slowly. One last time, we'll roll the tongue, inhale all the air in, close your mouth, and after that, slowly, we'll start to exhale. Yes. Now, the last pranayam for today is Brahmari pranayam. For this, we can either we can close our ear flaps, the one which is in front of the ear. We can close the ear flaps with our index fingers or our thumbs. Or if you're not comfortable in this also, we can simply close our eyes and inhale, making the black humming bee sound, and we'll hum. So we inhale, and while we exhale, we hum, we create the humming sound. So let's inhale together. Close your ear flaps if possible, and exhale. Inhale. One last time, we'll slowly inhale together. And let's exhale slowly. I would request all of you to take your palms together at the center of your heart. Close your eyes for a second here. And just focus on your breathing. Just focus on your breathing. And you do not have to force yourself into the breathing. Just see and notice your body, how it breathes on its own. Just inhale and slowly exhale. Shanti, Shanti, Shanti. And now just take your hands on your eyes and try to feel the energy there. And slowly we flutter our eyes and open them. Namaste. Thank you so much for joining me today. And yes, we're open for the questions. And I guess I can only say, I'm already seeing that Jagruti is, we do go to gym, but due to lockdown, we have not been outside. Yoga is pretty much in our reach. And thank you so much. You should always practice it. And I am a heart patient. What type of precautions I take when I do yoga? So Nagarajan ke liye, I would say कि heart patients के लिए the things is totally different. You cannot put much stress on yourself, and especially आप forward bending के आसन्स तो बिल्कुल almost try करो कि कम से कम करो, क्योंकि जब आप forward bending में होते हैं तो आपका जो blood circulation है वो आपका chest की तरफ जाता है, तो इस वजह से वो आपको problem हो सकती है. तो आपके लिए आप ट्राई करो कि जितना आप हल्के कर सको. कोई भी ऐसा आसन मत करो जिसमें आपका अगर बहुत ज्यादा आपकी एफर्ट जा रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी जा रही है. यू हैव
much, Ms. Tagiad. And for the Antima Rajpar, how to reduce muscle cramps in yoga. Muscle cramps अगर योगा में बात करती हो, मोस्टली पहले तो आप सबसे पहले क्रैम्प्स के लिए आप अपने बॉडी को हाइड्रेट बहुत अच्छे से रखिए. एंड उसके अलावा जब हम बात करते हैं योगा में, तो उस पॉइंट पे आप ट्राई करो कि सबसे पहले ना जितने ज्यादा आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर सको, क्योंकि वार्मिंग अप योर बॉडी इज रियली एसेंशियल. क्योंकि जब तक आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी, जब तक आपकी बॉडी में वो हीट नहीं होगी ना, आप कोई भी आसन करने जाओगे, आपके क्रैम्प्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इस वजह से जस्ट ट्राई की वार्म अप सबसे ज्यादा रखो, कूल डाउन सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जितना आपके लिए मेन सेगमेंट जरूरी होता है, उतना ज्यादा आपका वार्म अप एंड कूल डाउन सेशन जरूरी होता है. सो ट्राई करो, कुछ जो हैमस्ट्रिंग्स के होते हैं वो आप कर सकते हैं प्रैक्टिसेस, उन पे फोकस कर सकते हो. बहुत ही स्लो प्रैक्टिसेस, बट yes, the main focus should always be on the way we start it and the way we end it. वो बहुत ज्यादा important है. Any other questions or anything which you want to ask? Oh, thank you so much. So I hope we are done here, and I hope it was something which is beneficial for you as well. And thank you, Dr. Hasni, for giving us the space to share all these things with the students. Yeah, thank you so much, ma'am. Ma'am, just request you can stop your screen sharing, please. Yeah, I'll just stop it. Yes. Yes, Desai sir, anything would you like to add? No, I think I would just like to thanks to you, to Principal Sir and the college for giving us this opportunity. We know that because of the webinar format and because of the time constraint, we had to leverage a format where we could not give entire demo for all the asanas. So we tried to keep a balance of few slides and few demo. But yes, again, thanks for the opportunity. Feel free to join the Facebook group where we can really give you that dedicated demo and counseling. So yes, happy to engage with the college for the future opportunities. And thanks again. Yeah, thank you so much, sir. Obviously, it was a privilege for us to really collaborate with Plex Wellness, and I'm sure that many of them would be getting in contact with you for all the practices and all the wellness you spread to the society. And much more thanks I would like to mention here for Neha Sharma madam, that in very short span of time, madam, you covered almost all the asanas and what kind of pranayam has the benefit to all of us. The practice of pranayam obviously involves breathing exercises and all other patterns, and you purposely inhale, exhale, and hold your breath in a really specific sequence. So with this, I'm sure that including me also, all our students and all the participants of this webinar would be practicing this at home. Many of them has said that they are already going to the gym or already practicing yoga. But those who are not doing, you can start from today itself. Consider this day as a new start in your life to practice yoga. As I would also do what I believe today after seeing all such instructions from our instructor. So yes, yoga, as it is said that it is derived from the Sanskrit word root or yaj, which means that to unite. And yoga leads to the union of individual consciousness with that of universal consciousness. And it indicates a perfect harmony between the mind and the body. So man and nature, this is how yoga works on the level of one's body, mind, emotion, and energy. This has given rise to 4 broad classifications. Whatever I knowledge, I have limited knowledge about yoga. That is, it is a karma yoga, it is a bhakti yoga, it is a jnana yoga, and sometimes it is a kriya yoga. So this is what little knowledge I have about yoga. If I'm correct, if I'm wrong, please correct me, Neha madam.
This is how yoga is described. I Yes, think. yes, it is all about the 4 major classification, and you said it right. Okay, thank you. So yes, with this, then it's time to wind up now. Just a small announcement for all of you that you will be receiving the feedback forms in your email IDs right after, I guess, end of this webinar, or by 1:30. I have scheduled the email timing 1:30. So around 1:30, you all will be receiving the feedback form. Once you fill the feedback form, you will be receiving the certificate by 25th of June in your email addresses. So please don't worry about the certificates. You will soon receive it that. And on behalf of Plex Wellness also, I would like to announce you all that if you have any interest to contact Plex Wellness, so Desai sir has already mentioned in the chat box. Also, many of them were asking about PPT and all such kinds. This program was going live on YouTube, so you can subscribe my channel, Dr. S.S. Hassani, and you will get the full program link on my this YouTube channel. So yes, with this, once again, I would like to thank Plex Wellness and especially Desai sir, Neha Sharma ma'am for collaborating with our institute and sparing their valuable time in front of our lovely audience comprising of faculty and students all around our country. So sir, once again, on behalf of my management, on behalf of all the participants, on my behalf, I thank you both for really making this webinar a successful one. So yes, with this, all of you, once again, a happy International Yoga Day 2021. And I'm sure that you all must be getting some kind of benefits from this yoga, and you will be practicing yoga in your lives also. So with this hope that let us again meet next year, maybe with Plex Wellness again on the same day, International Yoga Day 2022. But before that, we have a lot of activities in the near future. Soon we will be keeping national moot court competition and such kind of activities for student national conference we have scheduled in next month. So I really expect a same cooperation from all of you in our future events also. So with the final wording that practice yoga for your consciousness of mind and body and make this combination a deadly combination for your body itself. So with this, let me again thank you all of you and wishing you all a very, very happy International Yoga Day once again. Thanks a lot.